overview of the scheme as well as the status of its progress. I extend a warm welcome to you, sir. Also present on the dais are Secretary, Department of Pharmaceuticals, Shri J.P. Prakashji, Joint Secretary, Shri Rajneesh Tingle, Chairman, Bureau of Pharma PSUs of India, Shri Biplab Chatterjee. I extend a warm welcome to one and all. Friends, after the Honorable Minister's address, we will take some questions. Kindly follow the points of orders when you ask a question. May I also request you to kindly switch off your phone or keep it on a silent mode. Over to the Honorable Minister. धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सभी नागरिकों को दवाई उपलब्ध कराए और सस्ते दाम में अच्छे गुणवत्ता के दवाई उपलब्ध हो। इस लक्ष्य से प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इसका हमने रीलॉन्चिंग किया है और जब इस सरकार की शुरुआत हुई पूरा देश भर में केवल 88 जनौषधि केंद्र थे, लेकिन आज के दिन में 1320 जनौषधि केंद्र पूरा देश भर में है और 17 के आखिरी तक जैसे हम हमारे बजट में घोषणा की थी वैसे देश भर में कम से कम 3000 जनौषधि केंद्र होंगे। और एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगा, जब शुरुआत की तो जनौषधियों का टर्नओवर 3 करोड़ था, लेकिन 17 के अंत तक जनौषधि का टर्नओवर 60 करोड़ हो जाएगा। मोदी सरकार की ये स्वास्थ्य सुरक्षा की, हेल्थ सिक्योरिटी की बहुत बड़ा पहल है और इस पहल के द्वारा हमने अब तक 19 MOU किए महाराष्ट्र के साथ, केरल के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, कई प्रदेशों के साथ और उसके साथ हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे अन्य संस्थाओं के साथ, NGO के साथ, ये सारे लोगों के साथ हमने MOU किया। ये MOU के तहत कुल मिलाकर के 1000 से ज्यादा जनौषधि केंद्र हम देश भर में खोलने के लिए अनुमति भी दे चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे देश भर के फार्मेसी के स्नातक हैं, जो स्व उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जनौषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों से हमने
और बाकी लोगों से एप्लीकेशंस मांगे जनौषधि केंद्र खोलने के लिए। बड़ी खुशी की बात है 30,000 लोगों ने आज तक अप्लाई कर चुके हैं और वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद वहां के ड्रग लाइसेंसेस उनको मिलना चाहिए। उन प्रदेशों के ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी जो होती है, ड्रग कंट्रोलर होते हैं, उनका अनुमति मिलना चाहिए। वो प्रोसेस आज के दिन में जारी है। मुझे लगता है यानी हम ऐसे एक लक्ष्य रख सकते हैं, ये मोदी सरकार की लक्ष्य है, हर ब्लॉक तक हम प्रधानमंत्री जनौषधि को लेके जाएंगे। और आज के दिन में हमने ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र में जो दवाई और दवाइयों का सप्लीमेंट मिलते हैं उसका भी हमने बास्केट बढ़ाया है। जो 23 थेरापेटिक एरियाज है वो सभी 23 थेरापेटिक एरियाज के 500 से अधिक दवाइयाँ और 150 से अधिक सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स आज के दिन में उपलब्ध है। और खास करके कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV एड्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंटीबायोटिक, ऐसे कई दवाइयाँ उसका हमने एक बास्केट बना करके इस जनौषधि में आम जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया के तहत ऐसे ये ग्राहकों का लगातार हमको इसका फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये फीडबैक जा रही है। यानी कोई एक गरीब परिवार का हेल्थ बजट 1,000 रुपए होगा महीने का, उनको 200-300 रुपए में उस महीने का दवाई उपलब्ध हो रहे। यदि 2,000 है तो 500 में मिल रहा है, यदि 3,000 है 1,000 में मिल रहा है। और ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स है 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, जो रोजाना उनको एक या दो दवाई का सहारा चाहिए, ऐसे लोगों को तो एक कल्पवृक्ष बन चुका है प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र। और इसके साथ हम ये भी सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, और माननीय सुरेश प्रभु जी के साथ मैंने बातचीत कर चुका हूं, भारत के 1000 प्रमुख रेलवे स्टेशंस में हम जनौषधि केंद्र खोलेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के तहत। इतना ही नहीं है, जहां जहां बस स्टैंड है, जिला मुख्यालय हो सकता है, तहसील मुख्यालय हो सकता है, यानी तत्सम केंद्र हो सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को मैं पत्र भी लिखने वाला हूं और डायरेक्टली बात करने वाला हूं। ऐसे जहां हमारे गांव के, देहात के, हमारे आम जनता और गरीब जनता वो
दिन पर दिन आते जाते हैं। हर जगह ये जनऔषधि केंद्र को खोलने का हमारा इरादा है। मैं खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी हमारे जनऔषधि का और जनऔषधि कैंपेन का मस्काट बन चुका है। जहां भी जाए, किसी कार्यक्रम में, रैली में, कन्नड़ में मस्काटे ने मुकुट चिन्ह, कहां भी जाए वहां इस अफोर्डेबल मेडिसिन के बारे में, जनऔषधि के बारे में, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में जिक्र करते हैं, उद्बोधन करते हैं। और इतना ही नहीं है, उन्होंने निर्देश भी दे दिया हमें और नड्डा जी को, ये अफोर्डेबल मेडिसिन जो है ये हेल्थ सिक्योरिटी का बुनियाद है, आधार स्तंभ है, आधारशिला है, फाउंडेशन है, और इसको देशव्यापी बनाना चाहिए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि 21 अप्रैल को हमारे निरंतर प्रयास के कारण, यानी हमारे जयप्रकाश जी हमारे सचिव है फार्मा के, और हमारे बाकी अधिकारी टिंगल जी और हमारे विप्लव चटर्जी जी बीपीपीआई के सीएमडी है, जेपी जी के निरंतर प्रयासों के कारण एमसीआई ने एक आदेश देश के सभी डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को दे दिया। ये बहुत खुशखबरी है। एमसीआई ने कहा, दिस इज डेटेड 21 April 2017, Dean and Principal of all the medical colleges, Director of the hospitals, President all the state medical councils, Health Secretaries of all the states, Directors of medical education of all states, MC है, सर्वे सर्वा है. They have said, however, the class 1.5 of the Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulations 2002 has been amended in 2016 during our period, 2016, and notified in the Gazette of India on 21/9/2016, which reads as under use of generic names of drugs. Every physician should prescribe drugs with generic names legibly and preferably in capital letters, and he or she will ensure that there is a rational prescription and use of drugs. इतना ही नहीं है, आगे बढ़ करके all the registered medical practitioners under Indian Medical Council Act are directed, I repeat, are directed to comply with the aforesaid provisions of the regulations without fail. You are requested to give wide publicity of the above regulation, इत्यादि इत्यादि. आखिर का सेंटेंस मैं ध्यानाकर्षण करूंगा आप सबका. For any doctor found violating class 1.5 of ethic regulations, I request all of you to give adequate publicity, big publicity to this statement also. For any doctor found violating clause 1.5 of ethics regulation, suitable disciplinary action would be undertaken by the concerned, that is MCI, Medical Council of India. This is the instruction that has gone. Secondly, on 18th March, on 18th April, Health Ministry has sent a direction to all the central government hospitals making
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन कंपल्सरी, यानी जेनरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देना हर डॉक्टर के लिए आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरी किया गया है। उतना ही नहीं है, सभी प्रदेशों को, प्रदेश सरकारों को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी भेजा है ऑन द सेम लाइन्स, इसको कंपल्सरी करो इसे। और उसके साथ वो one more big thing has happened, which has somehow escaped the attention of my media friends. I'm really surprised. That big thing is on March 30th, 2017, हेल्थ मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग लाइसेंस देने के समय, बिकॉज इट इज द ड्रग रेगुलेटर, हेल्थ मिनिस्ट्री इज द ड्रग रेगुलेटर, आई एम द ड्रग प्राइस रेगुलेटर, फार्मा मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सबको आदेश दिया है, यानी हर ब्रांडेड ड्रग के ऊपर, हर ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर, वो इंडियन हो, वो मल्टीनेशनल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्ड लेटर में, बड़े फॉन्ट में उसका जेनरिक नाम अनिवार्य रूप से लिखना ही होगा। इट्स ए मस्ट फॉर ऑल द फार्मा कंपनीज इन द कंट्री एंड द फार्मा कंपनीज which are supplying pharma products from other countries which are being imported, on everything with the brand name. Henceforth, there should be generic name also of the medicine. इसका उपयोग ये होता है, तो यदि आप देखा होगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने डे 1 से स्टेप्स लिया, एसआईटी करने से हर स्टेप लिया, ऐसे इसमें हमने भी स्टेप लिया है। हमने क्या किया, हमने एक ऐप 2 साल पहले लॉन्च कर दिया, फार्मा सही दाम है, फार्मा जन समाधान, फार्मा डाटा बैंक। फार्मा डाटा बैंक में सभी कंपनियों का डिटेल्स, फार्मा जन समाधान में यदि वो दवाई उपलब्ध नहीं है, वो ओवर प्राइसिंग हो रहा है, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, उस शिकायत का तुरंत समाधान होगा। और फार्मा सही दाम, यदि वो दवाई खरीदने से पहले आप वो दवाई का नाम फार्मा सही दाम पर टाइप करोगे, उसका जो फिक्स्ड दाम है एनपीपीए से, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने जो फिक्स किया है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा इसका ये दाम, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये स्टेप्स हम ले चुके हैं। तो अभी हमने उसको और एक ऐड किया, यानी सभी ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर जेनरिक नाम बोल्ड और बड़े फॉन्ट में, वो ब्रांड नेम के नीचे नहीं। यूजुअली क्या करते हैं, ब्रांड नेम इतना बड़ा लिख देते हैं और वो जेनरिक नाम इतना छोटा प्रिंट करते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये समझते हुए हमने ऐसे किया है, ब्रांड नेम कितना बड़ा लिखेगा, उससे बड़ा फॉन्ट में जेनरिक नाम होना चाहिए। ये आदेश भारत सरकार ने आज के दिन में दिया है। आखिर में मित्रों, प्रश्न गुणवत्ता का है, क्वालिटी। तो इस क्वालिटी के बारे में काफी चिंतन मंथन हो गया। वो चिंतन मंथन करने के बाद हमें लगा हम ऐसे एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से
बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन हमारे गरीब मरीजों को और हमारे आम जनता को मिले। तो हमने ये तय किया, जो WHO GMP सर्टिफाइड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड अवेलेबल ग्लोबली, जो उसका सर्टिफाइड है, ऐसे 1400 कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं। ऐसे भारत में 10,000 फार्मा कंपनियां हैं। उस 10,000 फार्मा कंपनियों में 1400 फार्मा कंपनियां WHO GMP है, जो केवल मात्र हमारे डोमेस्टिक डिमांड के लिए सप्लाई करती है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए भी ये सारे कंपनियां काम करते हैं। ऐसे कंपनी ही जनौषधि को सप्लाई कर सकते हैं। दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन जनौषधि टेंडर, not otherwise. We are not going to procure our Janaushadhi medicines from any other producer, pharma maker. ये भी हमने इसमें कर दिया है अनिवार्य रूप से। इसके कारण मुझे लगता है आज के दिन में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। इट्स ए साइलेंट रेवोल्यूशन टू प्रोवाइड हेल्थ सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे डिमोनेटाइजेशन के कारण, नोटबंदी के कारण, GST के कारण और बाकी ऐसे कई उपक्रमों के कारण हमारे देश के वित्तायाम में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। ऐसे प्रधानमंत्री जनौषधि योजना के कारण हमारे देश के स्वास्थ्य सुरक्षा में भी एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारत दुनिया का फार्मेसी है। यदि 5 गोली, 5 दवाई दुनिया लेती है, दुनिया के लोग लेते हैं, उसमें 2 भारत के बना हुआ है। ये भारत का उपलब्धि है, हमारे फार्मा इंडस्ट्री का उपलब्धि है। और हमारी फार्मा इंडस्ट्री 20-21% की ग्रोथ कर रही है। आज के दिन में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है फार्मा इंडस्ट्री का। उसमें 1 लाख करोड़ हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं, 1 लाख करोड़ हम 215 देशों को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। और हमारा फार्मा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड, US FDA के स्टैंडर्ड और कई पौर्वात्य राष्ट्रों के जो ड्रग रेगुलेटर्स है उसके स्टैंडर्ड के बराबर है। ऐसे स्टैंडर्ड ड्रग्स हम बनाते हैं। लेकिन जो 1 लाख करोड़ का हम खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें ज्यादातर, यानी उसमें क्या है, हमारे अति गरीब है, यानी BPL है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल क्लास है, ये 50% से ज़्यादा है हमारे आबादी के। उन लोगों को टारगेट करते हुए हमने ये प्रधानमंत्री जनौषधि शुरू किया है। और मुझे लगता है इसके कारण मैं ये भी मानता हूँ, 3 साल के हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जनौषधि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। 88 से 1320, 3 करोड़ से 60 करोड़ का टर्नओवर। और इसके साथ हमने इसके इर्द गिर्द में जो है
उसका बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है स्टेंट का। हमने दाम जो कम किया, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आज के दिन में सभी अस्पतालों में 30,000 रुपए में उपलब्ध है। और जो बेयर मेटल स्टेंट है जो 45-50 हजार रुपए में बिकता था, वो आज के दिन में 7,500 रुपए में उपलब्ध है। और हमने इतना निगरानी की, सभी इंपोर्टर्स को कहा, सभी मैन्युफैक्चरर्स को कहा, पिछले 3 साल का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है और इंपोर्टिंग है उतना ही आप आगे आने वाले 3 साल में बरकरार रखोगे। इफ यू ड्रॉप, वी विल नॉट अलाउ दैट, देन योर लाइसेंस विल बी इन डेंजर। हमने ये भी कहा, यानी यदि आप स्टंट का दाम कम करके ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसको बड़ा करोगे, दैट विल नॉट बी अलाउड। आपने पिछले 3 साल का जो पैकेज रखा था, उसमें स्टंट का एक पैकेज होता था, उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक पैकेज, एक कास्ट होता था, उसमें एक प्रोसीजर का एक कास्ट होता था, पोस्ट प्रोसीजरल केयर का एक कास्ट होता था, वो उतना ही रहना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसका हमने कड़ी निगरानी रखने के कारण आज के दिन में, क्योंकि सालाना हमारे देश में 6 करोड़ कार्डियक पेशेंट्स है, 5,000 हमारे 5 लाख लोग ये प्रोसीजर करवाते हैं, और कम से कम 5,000 करोड़ का लाभ हमारे जनता को मिली होगी। उसमें भी संख्या बढ़ रही है जो प्रोसीजर ले रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे चीज जो है इसका केंद्र बिंदु है, इसका फोकल पॉइंट है जनौषधि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Then now we'll take some questions. Okay, we'll start with you. Yeah. हेलो मंत्री जी। आपने जो अभी एमसीआई का एक सर्कुलर पढ़ा, मैं इधर उधर प्रतीक श्रीवास्तव केंद्र की आवाज से जी। आपने एमसीआई का एक सर्कुलर पढ़ा, उसमें आपने शुड वर्ड का यूज किया कि डॉक्टर शुड प्रेस्क्राइब जेनेरिक मेडिसिन। आपने उसके बाद जो कहा कंपल्सरी, मैंने नहीं कहा, उन्होंने जो सर्कुलर में लिखा था वो पढ़ा। उसके बाद आपने वर्ड यूज किया कि कंपल्सरी है सभी डॉक्टर्स के लिए। तो पहले ये क्लियर कर दीजिए सर, ये शुड है या कंपल्सरी है, क्योंकि तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स फिलहाल जेनेरिक मेडिसिन नहीं लिख रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील के बाद, एमसीआई के सर्कुलर के बाद। मेरा दूसरा सवाल ये है सर, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के नहीं ठीक है, यानी मेरा दूसरा सवाल ये है सर, नहीं एक सवाल के बाद जाएंगे, ऐसे ये तो सेमिनार तो नहीं है ना सर। हाँ, देखिए नंबर 1 वो एमसीआई का सर्कुलर यही पढ़ा था। हाँ, आपने 1.5 सेक्शन जो मैंने पढ़ा उसके जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने पढ़ा all the registered medical practitioners under the IMC Act are directed to comply with the aforesaid provisions of the regulations without fail. This is the part of the circular. Therefore, it is, for example, if I don't prescribe generic, I should be explaining why I am not prescribing. Therefore, उन्होंने ये पूरा सर्कुलर को they have brought it under the class 1.5 of Indian Medical Council, professional conduct, etiquette and ethics. यदि मैं कोर्ट में गाउन पहन करके नहीं जा रहा हूं, टी शर्ट पहन के जा रहा हूं एज ए वकील के नाते मेरे पेशे में, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको, वो शुड भी हो या शैल भी हो। तो इसलिए when it has been made amply clear in the next paragraph only, they are directed to comply, means it is amply clear. And जो ये टेक्निकलिटी है ना,
वो टेक्निकलिटी को आने वाले दिनों में हम ठीक कर देंगे, उस चिंता की बात नहीं है। नंबर 2, आपका प्रश्न जायज है। मुझे मालूम नहीं कितने बार ये प्रश्न पिछले 70 साल में उठाया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 साल में आप उठा रहे हो, ये जागरण का एक प्रतीक है। यानी people have become aware on this issue because of the efforts of Modi government. Therefore, we will see that we will persuade our brother doctors across the country to follow this 1.5, and not only follow, they also participate in the propagation of this. Yes, madam. Next, please. Excuse. Please. Good afternoon. My name is Anu. I want to ask you about these serious allegations that are being raised with regards to Niti Aayog. They have just released their draft 3-year agenda, and there's a small section towards the end called access to medicines. In that, they're saying 2 things. One, that if we have low-cost medicines, they will be low quality. And this generic drugs argument that's being floated by some industry bodies as well. Secondly, they have recommended, the last line says that we recommend the delinking of the National List of Essential Medicines, NLEM, from DPCO, which is the Drug Price Control Order. Now, this is not exactly a new thing, because there have been meetings going on in the PMO with the secretaries of all these relevant ministries, as well as the Niti Aayog, where they are recommending this. So this is happening on the one hand, or on the other hand, we're having this press conference, important press conference today, and the PM is saying in Surat that we need more affordable medicines. So is there a difference of opinion in the government? If not, what is the single line that we need to take on this? Thing is, first of all, we need to understand that the first national list of essential medicine came in 2011, and the second list of second national list of essential medicine, which is an expanded one, all encompassing one, even vis-a-vis the number of medicines and number of therapeutic areas, is under Modi government. That was done by Health and Family Welfare Ministry in 2015. And if you do some research, while first one came in, NLEM came in 11, the DPCO happened in 13. But when it came in 15, the DPCO happened in 15 only. Not only DPCO is Drug Price Control Order. NLEM is prepared, and after NLEM is prepared, then it is made Scheduled 1. Then after making it Schedule 1, it is made notified for others' benefit. It is brought under the notification. After the notification, through Drug Price Control Order, it will be brought under price control, and that prices will be again notified. This is the entire process. Therefore, this entire process, the last UPA government took happily 2 years to do it, whereas this government did it in next 1 month. Therefore, it clears our intention. Not only that, we also, in the earlier dispensation of UPA, around 350 medicines were put under drug price control. Now more than 1,200 drugs are under price control. Therefore, the intention is very, very clear. Can you just specify what's the intention? To not dealing, or to keep it And secondly, one more thing is, when I said WHO GMP is the highest certification. Therefore, there is no compromise on the quality. The best quality medicines are provided through Janaushadhi. And all the countries, including the developed countries, are having drug price control, both drug control and drug price control. And we also need to understand it is only salt. Generic branded, then patented. Therefore, the base is generic only. Right here. सर, Here. क्या सरकार अपने सभी अस्पतालों और जितने भी मेडिकल सेंटर हैं उस पे जेनरिक ड्रग लिखित में सप्लाई करने के लिए मैंडेटरी करेगी? देखिए,
अभी हम जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी करने के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उसके साथ ये जनौषधि केंद्र के द्वारा हम जेनरिक मेडिसिन मुहैया करने का और उपलब्ध करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। हर मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, जहां जहां निःशुल्क दवाई वितरण का सेवाएं है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है, जिस जिस प्रदेशों में 17 प्रदेशों में है, हर जगह वो जनरिकी ले ले, अच्छे गुणवत्ता के जनरिकी ले ले, उससे वहाँ के उनके खजानों को भी काफ़ी राहत मिलेगी और अच्छे सस्ते दवाई भी हमारे मरीजों के हमारे जनता को मिलेगी, वो कोशिश करेंगे। Hello, sir. Leroy from Cogensis. Sir, in January you had said that you'll be having 3,000 Janaushadhi stores by March. At that time you had said that you've signed a MOU for 1,000 Janaushadhi stores with the Jan Yuva Society. And you also had said that 6,000 other MOUs are also there. Okay, but by April you just had 1,253 stores. Also there are concerns of 1,253, that's the document you've seen. Yeah. And also, there is also concern about medicines not being available at those stores. So, why have you missed the target and why have you postponed it to 2017 end? And what will you do about increasing the supply? One of the most important linkage is drug licenses. The central drug regulator, the Director General of Drug Control in India, DGDCI, and drug controllers in various states, they have to physically inspect each of the premises and give the drug licenses. I will ask our secretary to give the details. He will circulate it to you. These are the number of applications, these are the number of MOUs, these are the number of Janaushadhi Kendras where in principle approval has been given by ministry, and these are the, if you have, you can tell me, these are the number of applications pending with the drug controllers, and these are the number of Kendras cleared by. It is here, my dear. Applications approved 30,418. Applications pending 2,008. Drug license applied 559. Operational Kendras as on today is 1319. Every day it is increasing. Therefore, it is not missing of the target. We are continuing with great effort and we will cross that 3,000. Therefore, I also gave you a background that this Janaushadhi was started in 2008 and it reached a very happy number of 88 in 2014. What was the number? Very happy and impressive number of 88 after a great effort of 6 years. But from 2014 to 2017, it has come to 1320. We will pursue further. Yes, please. Sir, Either. sir, here. Yeah. So how many Janaushadhi Kendras have been opened in Tamil Nadu so far? And how many shops will be opened in the upcoming years? And what is the status of implementation of this project in Tamil Nadu? Because already Tamil Nadu government offering low-cost medicines to people in the name of Amma medicines, medical shops. You have asked a supplementary type of questions they ask in Lok Sabha and Rajya Sabha. Good. In Tamil Nadu, the total applications approved is 881 and drug license applied is 29 and functional Janaushadhi Kendras are 56. Despite Amma Aushadhi, Janaushadhi is also popular there.
Yes, you were very good. Yeah. Does the question, does the government intend to ban the writing of brand names along with generics? Is there a move? We are in a democratic country, and everyone has, every entrepreneur, every enterprise has his right to go with his legitimate brand, his legitimate brand, his legitimate banner. Sir, I am telling you. I am coming to you, sir. Everybody has. Therefore, we are only promoting generic names, writing of the generic prescription. We are not into banning anything. We are only requesting, persuading, compelling, write generic. For example, if a consumer, if a patient, if a person wants to buy generic branded, I can't stop him. I have no business to stop him. If a consumer wants to buy a patented medicine, which is a multinational company's medicine, whatever may be the cost, nobody can withhold him. It is his right. It is the matter of his choice. Therefore, this entire activity is to provide medicine for poor people, those people who are not getting any medicine because of the high cost. Yes. So I just After- have a question. The Prime Minister has indicated that there will be a legal framework might come in, that the doctors will have to prescribe generic medicine. So is this legal framework going to come? And also another question. Wait. Yeah. Earlier, our my dear friend has already asked that question. If I make the should as shall, the legal framework is completed. That is one thing. And secondly, वो substitution का कहाँ है दिखा? नहीं कुछ करके दिया था ना आपने? नहीं वो तो मालूम हो गया. There is another thing that is another hindrance is there. For example, if I take a prescription which is a branded prescription, the present laws, the Pharmacists Act, what is that act? Drugs and Cosmetics Act. It withholds the pharmacies to give a generic, equivalent generic medicine, because it is really means we need to go deep into that, why such a act was framed in the first place, that whatever is prescribed, that only has to be given. A substitute cannot be given. Therefore, we are going to bring in amendments into that Drugs and Cosmetics Act also, wherein there will be this opportunity, this scope for substitution. Yeah. So this That is what the Honorable Prime Minister is intending at. These two things. One is shall and another is substitution. So I also Madam, wanted to what ask- I wonder is, Just because an there are. extension of that question. Supplementary. Yeah, I just wanted to ask how much awareness you're going to give on generic medicines to the public. Like, you said that. How much? Awareness Awareness. you'll be giving about generic medicines, because as you see this, as state, Kerala only is aware of generic medicines. Otherwise, other states don't have much awareness on generic medicines. So what would be BPPI's role, or what would be your role in giving awareness on generic medicines? I think it is not so. Actually, when we started this neem coating of urea, I'm going to fertilizers now. The NPK ratio was 9.7 nitrogen to 4:1, which was very bad. And everybody, like you told me, Ananthkumar, nothing is going to happen.
because you have to convince farmers. Farmers has to understand. We started our effort. If you ask now, what is the ratio, you will be happy. From 9.7 is to 4 is to 1, it has come down to 6.7 is to 3 is to 1. I am confident in one more year, it will be 5.7 or 4.7 is to 2 is to 1. That is of global standard NPK ratio. That means within 5 years, which was totally reverse, we could bring it to the healthy ratio. Same thing, this generic medicines, affordable medicines, the message is spreading in a big way. And my first thanks is to the Prime Minister, because in each and every public meeting, he is speaking about stent prices, he is speaking about affordable medicine, he is campaigning about Janaushadhi. Yeah. Sir, this is Lesemba from PTI. You spoke about price control of drugs, and the number is, you said it's about 1,200 now compared to 350 by the UPA government. So going forward, what's the roadmap? Do you intend to bring many more drugs under price control? And also the second question that I have is that NPPA is today fighting a lot of cases against companies over drug overcharging. So how do you intend to resolve that issue? The issue is that wherever overpricing is there, and we have given a notice, and the issues are pending before the different courts, I think there must be litigation to the tune of nearly 4,000 crore rupees. And it is before the judiciary, and when it is before the judiciary, like you, I am also waiting. And whenever judiciary resolves these disputes, then the resolution happens. And secondly, this amendment to the NLEM and addition to the NLEM, National List of Essential Medicines, is a dynamic process. Because the Health and Family Welfare Ministry will be always studying the disease profile of the country. Based on the disease profile, you will have the therapy, and based on the therapy, you will have the medicines. And even in the medicines, because of the continuous scientific inventions, discoveries, drug discovery, that's a big word, buzzword, drug discovery and innovations, various combinations, various mixtures, and various drugs come into the market. And based on that, some of the drugs go out of NLEM. Many more drugs come into the NLEM. It's a dynamic process. Therefore, NPPA is there. Yeah, that lady there, yes, that side, sir. Sir, here. Ali. Sir, so first of all, the government should be commended for doing a lot in terms of capping the prices on stents and its overall approach in terms of reducing the price for medicines. But that's why there is this thought that if all medicines and drugs as well as equipment brought under the NLEM, it will go in fact a long way in stemming the prices of essential medicines. Second, my second question is very small. Is also in fact is the government thinking of reverting to what DPCO was prior to its amendment? That is when the cost of medicines was based on the cost of production of the drugs. And in fact, lastly, this concerns your ministry specifically. It's about the UCPMP. Is there a plan to make it statutory? In fact, as of now, because now it's voluntary employment. So, I don't want to
going to UCPMP now, because it will divert the entire attention of this press conference. Whenever I want to give a big news to you, I'll definitely give a big news to you. But at the same time, I can say, taking this last question only this much, that Here is the last. that you have 1 lakh combinations in pharma world. 1 lakh combinations. When it is 1 lakh combinations, you can go for most essential medicines. Therefore, we prepare the list of essential medicines which are used by large masses of people on day-to-day basis for chronic diseases, not for every disease, because ultimately you need to keep the production, the drug discovery, the research and development of medicines also viable. If not, you will become like what we have become already now on bulk drugs, APIs. In APIs, we have become an importing country, that too from one source. That is not advisable. Therefore, we need to create a balance. We should see that the people of this country will get affordable medicines, quality medicines. At the same time, the entrepreneurs of this country will also produce, manufacture, sell and export, and their businesses will be, though not profitable, at least viable. Ananthkumar ji, हाँ, here is Sandeep from Bhartiya newspaper. ये PMBJP is a fully central government scheme. तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, और अगर कोई खोलना चाहते हैं जो जैसे अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो है, तो उसको क्या क्या सहायता, हेल्प, असिस्टेंस दिया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार का परियोजना है और इस परियोजना हर प्रदेश सरकार अपना सकती है। हमारे साथ MOU करना होगा और इस MOU करने के बाद हर प्रदेश सरकार के अस्पताल में, वो जिला अस्पताल हो, उसके नीचे का अस्पताल हो, वहाँ प्रधानमंत्री जनौषधि का केंद्र खोलने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि वो सरकारी क्षेत्र में है, जो फार्मेसी है, जनौषधि केंद्र है, उसको सजाने के लिए हम 2 लाख रुपए पर केंद्र को सहायता देंगे, यानी ग्रांट देंगे। उस केंद्र को यानी इस कमरे में आप खोलना चाहेंगे, उसमें अलमीरा लगाना पड़ेगा, बाकी सब करना पड़ेगा, उसके लिए 2 लाख रुपए देंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे हर यूनिट को। यानी नहीं तो क्या मतलब है जी, यानी यदि आप महाराष्ट्र में 1000 खोलना चाहेंगे, मैं 2.5 लाख रुपए आपको दूंगा, सबको 2.5 रुपए का डोनेशन देना पड़ेगा आपको, उसका कोई मतलब नहीं। यानी एक केंद्र को 2.5 लाख रुपए का आप सहायता दोगे तो वो एक कमरे में उसको सजा सकते हैं, और उसके साथ 1 महीने का जो दवाई है हम प्री पोजिशनिंग करेंगे, पहले ही दे देंगे। और यदि सरकारी क्षेत्र में नहीं है, अन्य क्षेत्र में है, यानी एक निजी क्षेत्र में खोलना चाहेंगे, ये सहकारिता में खोलना चाहेंगे, या ये एक स्वयं सेवा संगठन में खोलना चाहेंगे, वहाँ हम यदि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हमारे नौजवान खोलना चाहेंगे, तो उनके लिए और मददें भी हम देंगे। वो पूरा डिटेल सर्कुलर दे दूंगा आपको। ये रिपीट होगा नहीं, he is waiting for very long. आप तो जरूर पूछ सकते हैं सर, 10 पूछ सकते हो। दवाओं के मामले में पहली बात तो दवा केमिकल से बनती है, जब वो तैयार हो जाती है तो केमिकल से वो दवा कहलाती है ना। ये हिंदुस्तान में बनाने के लिए 2 फार्मूले अप्लाई होते हैं, एक ब्रिटिश फार्मूला, एक इंडियन फार्मूला। इंडियन फार्मूला में 20% तक की छूट प्लस माइनस माना जाता है, और जो ब्रिटिश फार्मूला है उसके अंदर 10% की माइनस प्लस होता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो ब्रिटिश फार्मूले के तहत
जैसा प्रचारित किया जाता है डॉक्टरों को इनको, और ये जो है -20 के +- से बनेगा। Ask your question. Yeah. जनरिक मेडिसिन, तो जब लोगों के बीच में ये धारणा है कि जेनरिक मेडिसिन बेहतर नहीं होती ब्रांडेड से, तो उसका फायदा कंपनियां उठाती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इन मेडिसिन को, जेनरिक को आप बेचने के लिए बाजार में उतारते हैं कंपनी वाले, तो दोनों के रेट समान होते हैं MRP। ग्राहक की जेब से वही ब्रांडेड का पैसा जेब से जाता है। जैसे 18 रुपए का इंजेक्शन, कृपया प्रश्न, 10 रुपए की चीज है, 200 रुपए में ग्राहक की जेब से जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ग्राहक की ठगी को आप कब रोकेंगे और कब तक रोकेंगे? ये MRP विभाग जो है आपका इतने सालों से क्या कर रहा है? सर, हार्ट के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए एक रैमिपेरिल 5 mg टैबलेट्स है, पैक साइज 10 है, वो ब्रांडेड दाम है 72 रुपये 80 पैसे, जनरिक है 9 रुपये 68 पैसे। और दूसरा ग्लिमेपेराइड ना, नहीं एक एक जो मैं पढ़ सकता हूँ वही पढ़ सकता हूँ। ग्लिमेपेराइड 2 mg टैबलेट्स, लीडिंग ब्रांड्स का दाम है 10 का पैक का 50 रुपये, और जनौषधि केंद्र में मिलेगा 5 रुपये 5 पैसे में। और एंटी कैंसर का पैक्लिटैक्सेल इंजेक्शन 100 mg वायल, एक वायल 3458 रुपीज़ है ब्रांडेड। जनौषधि केंद्र में आपको मिलेगा 540 रुपीज़। लेकिन इसके ऊपर और MRP तो प्रिंट वही होनी चाहिए ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मार्केट के अंदर ये पोजीशन है। मैं जवाब दूं सर, मैं जवाब दूं? एक मिनट नहीं, आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं जवाब दूं, इजाजत है? देखिए, जनौषधि के ऊपर जनौषधि का दाम प्रिंट हुआ होता है, और जो ब्रांडेड बेचता है वो उसको जनौषधि ऐसे नहीं बेचता है, वो जनरिक ऐसे नहीं बेचता है। वो जनरिक ही है, लेकिन वो अपना नाम ब्रांड करके उसके ऊपर डाल देता है। तो वो ब्रांड के लिए उस जनरिक मेडिसिन का दाम 10 गुना हो जाता है उस ब्रांड के कारण। वो जनरिक लेंगे कम में मिलता है, वो उस ब्रांड के लेंगे 10 गुना ज़्यादा वो चार्ज करेगा, क्योंकि मेरा ब्रांड ले रहे हो। कौन कहा था आपको मेरा ब्रांड लेने के लिए? नेक्स्ट सर, सरकार जन औषधि जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए इतना काम कर रही है जैसा आपने बताया, तो क्या जेनरिक मेडिसिन के लिए कोई फ्यूचर में गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और जो प्राइवेट शॉप्स हैं कि अगर कस्टमर मांगते हैं तो उन्हें प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि वो ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन को कहते हैं वो बैन मेडिसिन है जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस दिए जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में? देखिए, जनरिक दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए हम कंपल्सन कर सकते हैं, और जनरिक दवाई हमारे जनौषधि केंद्र से और सरकारी अस्पतालों से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन कोई फार्मासिस्ट कहेगा मैं ब्रांडेड बेचूंगा, तो बेचेगा ब्रांडेड, तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसलिए जहां जनरिक मिलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जनरिक का एक पूरा नेटवर्क पूरा देश में हम बना रहे हैं। जैसे PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप जो फूड वर्ल्ड में जाकर के खरीदते हो, यू कैनॉट हैव क्वेश्चन मार्क्स वाई PDS राइस इज नॉट आई एम गेटिंग इन फूड वर्ल्ड आर समवेयर। Therefore, जैसे आपने कहा ना, ऐसे PDS नेटवर्क जैसे
पूरा देश भर में जेनरिक नेटवर्क बनाने का हमारा सोच है। हर जगह जेनरिक दवाई मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है और किस्म के दवाइयाँ नहीं मिलने वाला है, वो अपने जगह बिकेगा। Madam, that's really the last question. I think Minister has taken our question. Your friends have been asking. No, please, Yeah, please. yeah. So some specific questions in Janaushadhi. I've done some field work and through my field work, something that has come to me is store owners are saying they are not willing to procure from BPPI. Instead, they're going to sell drugs from existing pharmacies. They also own other pharmacies. There is one such store in Delhi itself. So really vigilance is an issue. The other thing is, yeah, so that's one thing. Vigilance is an issue in these stores. Of course, also my friend pointed out that there is some issue with regard to procurement. Store owners have been saying distributors don't give it to them because they don't have stock, and distributors say the DPPI is not making. My only request to you is, if you come out with specific things, then we will take action about it. No, you can write it and give it to me. We will take action. Shall I tell you one thing? When you are going to have a nationwide network, many things needs to be attended. Therefore, we will attend to all such issues. Yeah. Thank you, friends. Thank you, Honorable Minister, sir. Please join us for lunch.